وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we begin from verse number 64 of Surah Qasas. Welcome you all to the first day of the week session of the Quran class. Pray to Allah to keep us consistent, be regular, and may Allah help us or enable us to derive the best opportunity which Allah has provided for all of us in studying His book. Ameen ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون فيوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. And it will be said, call your partners. فدعوهم, then they will call them. فلم يستجيبوا لهم, then not they will respond to them, and they will see the punishment. If only they were on guidance, or if only they were guided. And the day he will call them, then Allah will ask, Maza ajabtumul mursalin, what answer did you give to the messengers? Fa'amiyat alayhimul amba'u, then will become obscured upon them the news on that day, so they not will be able to ask each other. और कहा जाएगा पुकारो तुम्हारे शुरका को, फिर वो पुकारेंगे उनको, फिर नहीं वो जवाब देंगे उन्हें, और वो देख लेंगे अजाब, काश वो होते हिदायत पर। और जिस दिन वो उनको बुलाएंगे, फिर जिस दिन वो पुकारेगा उनको, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बुलाकर पूछेगा क्या जवाब तुमने दिया रसूलों को, फिर ओझल में पड़ जाएंगे या वो अंधापना इख्तियार कर लेंगे उस खबर के मामले में, फिर वो नहीं एक दूसरों से सवाल कर पाएंगे. So this is going to be a reality which will unfold on the day of Qiyamah for the polytheists in particular who used to call others besides Allah and worship them. I thought they will be their intercessors or bail them out of the critical situation on the day of Qiyamah, but it's not going to happen. जब अल्लाह उनसे फरमाएगा बुलाओ तुम्हारे शुरका को, तो वो बुलाएंगे, कोई जवाब नहीं देगा. अल्लाह पूछेगा क्या जवाब तुमने दिया रसूलों को, तो उनका ख्याल उस वक्त काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, गुम हो जाएंगे. उनके तमाम दलीलें, उनके तमाम दावे जो उन्होंने दुनिया में करते रहे, सब गुम हो जाएंगे, ओझल में पड़ जाएंगे, in a state of confusion. They will not be able to ask each other, or not they will be able to give the answer to Allah subhanahu wa ta'ala, because the messengers conveyed the message to them. But what response they gave to the messengers? Sorry, we will not accept what you say. We will follow only the traditions of our forefathers. This is what answer they gave. अल्लाह जब उनको पूछेगा तुमने क्या जवाब दिया रसूलों को, क्या जवाब असल में उन्होंने दिया था, तुम्हारी बात हम मानने को तैयार नहीं, हमारे बाप दादा के रस्म रिवाज को ही हम पैरवी करेंगे, यही उन्होंने जवाब दिया था. लेकिन उस दिन वो जवाब भी उनको सूझेगा नहीं. उनके तमाम दलाइल, उनके तमाम दावे, उनके तमाम सबूत, और जो भी उनके झूठे बहाने जो उन्होंने दुनिया में पेश किए थे, सब काम नहीं आने वाले, और ना ही जो है उसमें कोई दम था. Nor did it have any weight in it. And they will not be able to even ask each other to get the answer. They will all be totally stuck, and they will be totally pinned to the wall. Khalas. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. तो गुम हो जाएंगे उन पर तमाम दलीलें उस दिन, फिर वो एक दूसरों से नहीं सवाल कर सकेंगे या पूछ सकेंगे. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, then as for the one who turned in repentance and believed and did righteous deeds, then perhaps that he may be among the successful ones. As for the one who turned in repentance and believed and did righteous deeds, and perhaps that he may be among the successful ones. Your Lord creates whatever He wishes and chooses, not is for them any choice. Glory be to Allah, and exalted is He about what they associate partners with Him.
And your Lord knows ma tukinnu suduruhum wa ma yulinun, what conceal their breasts and what they reveal. He is Allah, and He is Allah. There is no God except Him. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. To Him belong all praises in this world and in the hereafter. And for Him is the decision. Wa ilayhi turja'un, and towards Him you shall return. फिर रहे वो लोग जो तौबा किए और अमल, रहा वो शख्स जो तौबा किया और ईमान ले आया और अमल किया नेक, तो परहैप्स कि वो हो जाएगा फलाह पाने वालों में से। और आपका रब और आपका रब पैदा करता है जो कुछ वो चाहता है और मुंतखब करता है, नहीं होगा उनके लिए कोई इख्तियार। पाक है अल्लाह और बुलंदतर है वो इससे जो वो औरों को शरीक ठहराता है। और आपका रब जानता है जो कुछ छुपाते हैं उनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। वही अल्लाह है, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। उसी के लिए तमाम तारीफें दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसी के लिए फैसले, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया अफला तस्माऊन। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिल तस यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी अफला तुबसिरून। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। Ask, do you see, if had made Allah upon you the night perpetual until the day of Qiyamah, man ilahun ghairullah yatikum bizya. Who is the God other than Allah who can restore you the light? Will then not you listen? Ask, do you see, if had made Allah upon you the day continuous or perpetual until the day of Qiyamah, who is a God besides Allah who could bring you the night in which you could take rest in it? Will then not you do then not you see? And out of His mercy, He made for you the night and the day that you may take rest in it, and that you may seek from His bounties, and so that you may become tashkurun, grateful. पूछिए, भला तुमने देखा अगर बना देता अल्लाह तुम पर रात हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक, तो कौन है माबूद अल्लाह के अलावा जो तुम्हें ले आए रोशनी? फिर क्या नहीं तुम सुनोगे? कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदन। पूछिए, भला तुमने देखा अगर बना देता अल्लाह तुम पर दिन हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक, कौन है माबूद अल्लाह के अलावा जो ले आएगा तुम्हें रात जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको उसमें? फिर क्या नहीं तुम देखते हैं? और उसकी रहमत में से उसने बनाया तुम्हारे लिए रात और दिन, ताकि तुम सुकून हासिल करो उसमें, और ताकि तुम तलाश करो उसका फजल, और ताकि तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो या तुम शुक्रगुजार बनो। So Allah is asking, who has created this beautiful system of this world, where Allah subhanahu wa ta'ala has provided you something called night in which you take rest in it. Imagine these 24 hours without a night, or imagine this 24 hours without a day. How our lives would have been. It would have been chaotic. It would be directionless. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस निज़ाम को इतना बेहतरीन बनाया कि अल्लाह ने रात भी बनाई, दिन भी बनाई, and He brings it alternative. Suppose only night would have been there, also life would have come to a standstill, and if only day would have been there, life would have come to a standstill. Or even if something would have happened, it only would have happened absolutely inefficient. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बनाने का तरीका, उसका निज़ाम ही अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया कि इंसान के फैकल्टीज, इंसान के जिस्म, इंसान की ज़रूरियात और इंसान का मेंटल एंड फिजिकल फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने तमाम सिस्टम को इसलिए इतना खूबसूरत बनाया, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, man's biological structure, his emotional needs, his physical needs, and his requirements. Everything Allah subhanahu wa ta'ala has made it so meticulously and so perfectly. So Allah says, is there any other God
who can do all this for you? How could you ever then associate partners with Allah? फिर कैसे तुम औरों को शरीक ठहरा सकते हो अल्लाह के साथ? ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. And the day he will call them, then Allah will ask, where are my partners, those whom you used to assert? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, and we shall draw out from every nation a witness. Then we shall say, Hatu burhanakum, bring your proofs. Then we will say, bring your proofs. Then they will know that the truth is for Allah alone, or belongs to Allah alone, and will vanish from them. Ma kanu yaftarun, what they used to invent, lies. उस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ है मेरे शरीक जिनके बारे में तुम बड़े दावे करते थे? और हम खींचेंगे और निकाल लाएंगे हर ग्रोह में से या हर उम्मत में से और हर कौम में से एक गवाह। फिर हम उनसे पूछेंगे, फिर हम उनसे कहेंगे, ले आओ तुम्हारे दलील। फिर वो जान लेंगे कि हक अल्लाह ही के अख्तियार में है, और गुम हो जाएंगे उनसे जिसका वो थे झूठ खड़ते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला will draw out from every nation a witness, that is every prophet, and Allah will call these politicians and say, where are all your those whom you used to associate partners with Allah and make tall claims about? Where are all of them? There'll be nobody. सब गायब हो जाएंगे, सब गुम हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा, किसी का काम नहीं आने वाला। Submit and surrender before Allah, supplicate only to Him, pin your hopes on Him, trust Him, prepare for the hereafter, for you will meet Him surely. And on the day of Qiyamah, that should not be a moment for regret for any person. उस दिन पछतावे का मौका नहीं आना। अल्लाह ही के होकर रहो, उसी में हमारे लिए खैर है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी पर मुनहसर है, क्योंकि तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के हाथ में है। वही दुनिया और आखिरत का इख्तियारात रखता है, उसी के कब्जे में पूरे फैसले। And we are all going to return to Him and be answerable to Him. Having hopes on others, trusting others, supplicating to others is absolute stupidity and foolishness, and that will cost us very dearly on the day of Qiyamah. May Allah protect us from any element of shirk in our lives. Ameen. We're starting a new narrative from here onwards. We're going to discuss about Harun. This man Harun was a very, very wealthy person during the time of Pharaoh. But the strange part is that he belonged to the Bani Israel and was a cousin of Hazrat Musa alayhi salam. But on account of his arrogance and pride and wealth, he rejected the message of Musa alayhi salam and more inclined towards Pharaoh. उसके किबर की वजह से, उसके जुल्म और ज्यादती की वजह से और उसके दौलत के घमंड की वजह से उसने मूसा अलैहि सलाम की बात को रद्द किया, और उसका जो है ज्यादातर फिरौन के साथ ताल्लुक बन गया था। So Allah subhanahu wa ta'ala is discussing about this man. What was he? How he was warned? And what was his final end? We'll study this inshallah now. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwa. Bil usbati ulul quwa is qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Verily Harun was from the people of Musa, but he rebelled against them. And we had given him of the treasures, but so its keys latanu bil usbati ulul quwa would have become a burden. So much so its keys surely would have become a burden upon a body of strong men. When said to him his people, La tafra, not you exult. Verily Allah does not love those who exult. बेशक हारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, लेकिन उसने सरकशी की उनके खिलाफ या जुल्म ज्यादती की उन पर,
और हमने दिया था उसको खजाने, इतना के उसकी चाबियां भारी और बोझ बन जाते ताकतवर लोगों के एक ग्रोह पर। जब कहा उससे उसकी कौम ने, इतरा मत, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इतराने वालों को। So much of wealth he had, so much of wealth he had that even its keys could not be carried by a body of strong men. And his people told him, see, don't behave arrogantly like this. Don't display your pride and arrogance in this form. Allah doesn't like it. But he would not care. And further, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. And seek in what has given you Allah the home of the hereafter, and do not forget your share of this world, and be good as has been good Allah ilaika to you. ولا تبقي الفساد في الأرض, and not you seek to spread mischief in the land. Verily Allah does not love the mischief makers. He said, that is Harun said, only has been given to me on account of the knowledge near me. Does he not know that Allah indeed Ahlaka has destroyed from before him of the generations who were stronger than him in power and more in numbers? وَلَا يُسَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, and not shall be asked about their sins the criminals. और तलाश करो इसमें जो दिया है अल्लाह तुझे आखिरत का घर, और तलाश कर इसमें जो दिया तुम्हें तुझे अल्लाह ने आखिरत का घर, और ना तू भूलना तेरा हिस्सा दुनिया में, और एहसान कर लोगों पर जैसे एहसान किया अल्लाह ने तुझ पर, और ना तू तलाश करना फसाद मचाना जमीन में, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता फसाद करने वालों को। कारून ने कहा, सिर्फ वो जो कुछ मुझे दिया गया वो मेरे इल्म की बिना पर। क्या नहीं वो जानता कि अल्लाह हिलाक कर चुका इससे पहले कौमों को जो ज्यादा थी उनसे ताकत में और ज्यादा थी तादाद में, और नहीं सवाल किए जाएंगे मुजरिमों को उनके गुनाह के बारे में। So Allah subhanahu wa ta'ala says, the people told him, do not exult in the land. Allah does not love those people who exult, those who display their arrogance and pride. Allah likes people who are humble, people who are modest, people who are grateful. And further, the people also told him, from the wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has given you, prepare a best abode for yourself in the hereafter. And a very important message for you and I. अल्लाह ने जो कुछ मालो दौलत हमें अता फरमाता है, एक हिस्सा इसमें अल्लाह की राह में हमको खर्च करना है, ताकि आखिरत में हमारे लिए एक बेहतरीन जगह अल्लाह जन्नत में हमें मयसर करे। At the same time, play your role effectively in a right manner in this world. Don't become another extreme or go to another extreme where you forget this world altogether. Play your role effectively in this world. And number 3, do good to the people. एहसान करो लोगों पर, मदद करो लोगों की, जुल्म करने वालों का हाथ रोको, मजलूमीन की मदद फरमाओ, दीन की खिदमत करो, मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करो, contribute for the cause of Islam, be kind to the people, be good to them, behave well with them, help them as Allah subhanahu wa ta'ala has been so good to you. And do not seek to spread mischief in the land, means don't commit sins. Don't go against Allah's instructions. Don't disobey Allah.
Because Allah does not like the sinners, the mischief makers. So what is the answer? What is the response? क्या जवाब दिया हारून ने जब ये सुना? अरे रे, जो कुछ मेरे पास माल और दौलत है, ये मेरी मेहनत की वजह से, मेरे इल्म की वजह से, मेरी कोशिश की वजह से, I have been given all this on account of the knowledge that I possess, on account of my capabilities. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving him a counter reply saying that, does not he know that Allah has destroyed so many people before him who are much stronger than him in power and much stronger than him in the numbers and fan following? What about the people of Hud alayhi salam? How powerful they were. What about the people of Salih alayhi salam, the community of Samud, who used to make houses within the rocks? What about the people of Shuaib alayhi salam? These were communities which possessed tremendous power and might. What about Namrud? All these were great kings and they were very powerful communities, but Allah subhanahu wa ta'ala just destroyed them. How long will it take Allah to destroy you as well? And the criminals' record is so clear that they don't have to be asked. Their faces itself will be an evidence of their misdeeds which they committed in this world. उनके चेहरों से ही जो है ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, पहचान लिए जाएंगे कि कौन है क्रिमिनल्स, मुजरिमीन, और कौन है सालिहीन, who are going to go into the Jahannam and who are going to go into the paradise. From the faces itself, it will be easily identifiable because the faces of those people who are going to Jahannam will be black, like tar. And the people who will be going to Jannat, their faces will be glowing with brightness. नूरानियत आ जाएगी उनके चेहरे पर, उनके चेहरे चमकते होंगे. इससे पता लग जाएगा और मालूम हो जाएगा कौन है लोग जहन्नम जाने वाले, कौन है लोग जन्नत जाने वाले. पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके चेहरे ही जो है ये दलील पेश करेंगे. And that itself will be enough evidence whether they are the people of the criminal, whether the people who are going to Jannah or the people who are going to paradise. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Then he came out before his people in all his pomp and splendor. Said those who desired the life of this world, Ya laytana mislama utiya Harun. Would that had been for us like what had been given to Harun. Verily he is surely a person of fortune great. फिर वो एक दिन निकला अपने कौम के सामने पूरे ठाट बाट के साथ. कहा उन लोगों ने जो चाहते थे दुनिया की जिंदगी, काश हमें भी दिया जाता जैसे दिया गया खारून को, बेशक वो बड़ा नसीबे वाला है. वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्मा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा वला युलक्काहा इल्ला साबिरून. And said those who have given knowledge, wailakum, woe to you, the reward of Allah is far better for those who believe and do righteous deeds and not attain it except those who are patient. कहा उन लोगों ने जिन्हें इल्म दिया गया, अफसोस तुझ पर या अफसोस तुम पर, अल्लाह का अजर ज्यादा बेहतर है उनके हक में जो ईमान लाए और अमल किए नेक, और नहीं ये हासिल होती सिवाय सबर करने वालों को. यानी ऐसा सोच सिर्फ सबर करने वालों को हासिल होती है. तो knowledge of what? Knowledge of Islam. What is the sabirun? Those people who are steadfast and practice Islam with fortitude. कौन है ये लोग? वो लोग जो दीन का इल्म उनको हासिल है और दीन के इल्म के बिना पर वो साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारते हैं. ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सोच आएगा कि दुनिया की ठाट बाट का कोई एतमाद नहीं, भरोसा नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी सच काइंड ऑफ pomp and splendor can be a means of destruction. Who understand this? Only the intelligent people. Who are those people? Those people who are steadfast on the path of Islam. Most often we also get influenced and carried away when we see somebody possessing something better than us or celebrating a function in all grandeur. हमारा भी जो है दिल थोड़ा मायल होता है, which we should not. Yeah, Allah subhanahu wa ta'ala is testing them by giving them the wealth, and we know pretty well that they are misusing their wealth.
and they will stand accountable before Allah on the day of Qiyamah. Never ever get influenced by seeing people leading lives of pomp and splendor. ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये इंसान की बर्बादी का सबब भी बन सकता है. Allah does not stop us from becoming rich, but Allah does not like ingratitude. Allah does not like islaf. Allah does not like show. Allah does not like arrogance and pride. You can drive the best car, but always be grateful to Allah and earn in a halal way. You can live in the best of the house, provided there's no unnecessary facilities or luxuries there. Anything that will take you away from the thought and remembrance of Allah, stay away from it. And the best and simple solution is lead lives of humility and simplicity. सादगी की जिंदगी गुजारो, शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारो, अल्लाह की खुर्बत हासिल करने की कोशिश करते रहो. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छा कमाना, अच्छा खाने पर कभी रोकथाम नहीं किया है, लेकिन तमाम वो चीजें जो अल्लाह से हमें दूर कर दे, हम इससे बचना चाहिए. फखसफना बिही व बिदाहरी अल-अर्ज़ फमा कान लहु मिन फियतिन यंसुरुनहु मिन दुनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन. Then we caused to swallow him and his house into the earth. Then not was for him any power, or sorry, not was for him any group which could help him from besides Allah, and not he could be of those who could save themselves. फिर हमने धंसा दिया उसको और उसके घर को जमीन के अंदर. फिर नहीं था उसके लिए कोई ग्रोह जो उसकी मदद कर सके अल्लाह के अलावा, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका. He bragged and boasted about his numbers, about his power. Could anybody help him? People were only watching how his destruction took place. इबरतनाक एक मंजर था जो लोग देख रहे थे कि खारून उसका, उसकी दौलत, उसकी फैन फॉलोइंग, उसका इख्तिदार, उसका दबदबा, उसकी शान, उसकी शौकत कैसे जमीन के अंदर धस रही है. ये एक इबरतनाक मंजर था. The lesson for all of us. As they say, pride goes down with a fall. For which day are we actually finding ourselves to be so proud? For a temporal life, how stupid, how foolish and we on our part. What little we achieve, we are on cloud 9. जमीन नहीं दिखती. किस दिन के लिए क्या लेके जाएंगे साथ में? Whatever you may earn, whatever you may lead lives of luxury, finally you have to go into the earth with the cheapest cloth available. They just wrapped in that and thrown there. Khalas. For the temporal world, how much of show, how much of arrogance, how much of pride? इतनी शान, इतनी शौकत किसके लिए? बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है. अल्लाह हम सबको नेक हिदायत तौफीक अता फरमाए. आमीन. वासबह الذين तमन्नौ मकानहु बिलअम्सी यक़ूलून वकअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना वकअन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून. And became those who desired his position yesterday. They said, know you not that Allah enlarges the provision for whomever he wishes among his slaves, وَيَقْدِرْ, and constricts it? If not that had favored Allah upon us, surely he would have caused to swallow us as well. Know you not that not will be successful the disbelievers. और हो गए वो लोग जो तमन्ना कर रहे थे उसके मुकाम पर कल तक, या उसके मर्तबे पर, मर्तबे को कल तक. वो कहते, उन्होंने कहा, क्या नहीं जानते कि अल्लाह कुशादा करता है रिस्क जिसका वो चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है. अगर ना एहसान होता अल्लाह का हम पर तो हम भी धंसा दिए जाते. क्या नहीं वो जानते कि काफिर कभी फला नहीं पाया करते. After that only the people realized that only Allah subhanahu wa ta'ala who finally takes decisions. How long it would be for Allah to destroy us as well. It's good that we did not have so much wealth. That's what the people would say.
And this is the same thing that people will say when in the day of Qiyamah. If only we had not had so much of wealth, we would not be so much standing accountable before Allah. The poor people may be suffering in this world, but they will be the happiest ones in the Yawm al-Qiyamah, because their account will be very fast, very swift, and they will be admitted into paradise many, many years before the rich people will enter into paradise. आज गरीब परेशान है, भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो गरीब में से अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हुए अल्लाह के नेक बंदे रहे, ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुशकिस्मत। ऐसा नहीं कि अमीर रहना कोई गलत चीज है, बट when you're wealthy, you have to make sure that we are very, very humble. Humble doesn't mean that we become so timid that people take us for granted. That's not what it means. It means respect others, be good to others, be kind to them, be helpful to them, and always thank Allah extensively for having blessed us with so many bounties which Allah has not given to others. And contribute for the cause of Islam by spreading the message of Islam, by helping the have nots, and to do anything by means of seeking the nearness and pleasure of Allah. That's very, very important. So Allah subhanahu wa ta'ala says the people will regret, and they would then realize that Allah subhanahu wa ta'ala had been very merciful on us, that He did not destroy us like how He has destroyed Harun. And the point that remains is people who disbelieve, people who are ungrateful can never be successful, neither in this world nor in the hereafter. May Allah include us among the Shakirin. May Allah include us among the Mukhbitin. May Allah include us among the Salihin. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Inshallah, I don't want to rush in the last part because many of the brothers are also leaving on account in Gulf, and all their Isha time is getting advanced, so they have to go for Salah. So we'll not rush in the last part, inshallah. We'll catch up with this last part of Surah Qasas and start off another powerful Surah, Surah Ankabut, coming up. جزاك الله خير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته